Hi guys, welcome back to the channel. So we have finished with fungal diseases. With mucormycosis, we'll be seeing some of the viral diseases. Okay, let's start. Viral diseases. First is primary herpetic gingivostomatitis. Clinical presentation and pathogenesis. It is mostly seen in children and young adults. It appears as a painful vascular lesion, develops on all mucosal surface and rupture to produce foul-smelling ulcer. So firstly it develops as a vesicle, then after rupturing it produces a foul-smelling ulcers. Okay, the patient is febrile, drools and has significant malaise. Patient feels miserable and there is tender cervical lymphadenopathy. Lesions and acute illness last about 10 days and resolve with scar formation. जो acute illness है it lasts about 10 days and it resolves with scar formation. Okay. Now herpes simplex virus 1, that is HSV1, gain access to the patient via direct or airborne water droplet transmission from an infected individual. या तो direct होता है और या तो airborne water droplet transmission from an infected individual. Now, clinical course of this viral specific antibiotics is antibodies are IgM days 3 to 5, IgG days 5 to 21. So जब ये स्टार्ट होगा तो इनिशियल 3 to 5 डेज में तुमको IgM एंटीबॉडीज़ मिलेंगी और जब 5 to 21 डेज होगा उस समय IgG एंटीबॉडीज़ मिलेंगे. ओके. Now, residual viruses and ascend proximally along the epineurium of trigeminal nerve to the gasserian ganglion. तो जो अब वायरस रेसिडुअल हो गए मतलब अब इनएक्टिव हो गए लेकिन है अंदर ही, वो क्या करते हैं, वो एसेंड करते हैं अलोंग द एपिन्यूरियम ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व टू द गैसेरियन गैंग्लियन. इन द गैसेरियन गैंग्लियन द वायरस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर एंटीबॉडी अटैक बाय ब्लड ब्रेन बैरियर. सो उस गैंग्लियन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है तो वायरस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंटीबॉडी अटैक. Therefore, develops a viable dormant existence within the ganglion cell bodies. तो अब वो ganglion cell bodies में dormancy में चले जाते हैं. Now coming to recurrent herpes infection, clinical presentation and pathogenesis. Prodrome of burning, tingling or pain without a visible lesion. पहले तो burning, tingling और pain होगा. Then next is the vesicle may appear that will soon rupture into a moist ulcer. इसमें भी वेसिकल पहले बनेंगे उसके बाद will be converted into a moist ulcer. और an ulcer will emerge directly, या तो directly ulcer आ जाएगा. Such secondary lesion have a predisposition for the vermilion एंड वर्मिलियन स्किन एज ऑफ द लिप्स. तो ये वर्मिलियन बॉर्डर पे, लिप्स के वर्मिलियन बॉर्डर पे इनका प्रीडोमिनेंस होता है, लेकिन ये जिंजाइवा और पैलेट में भी दिखते हैं. ओके, रिकरेंट हर्पीज इन्फेक्शन. ओके, such recurrent lesion represent reactivation and migration of the virus. Stimulants such as sun exposure, cold temperature, cold sore and fever from other disease, fever blister evoke HSV1 activity. तो सन एक्सपोजर हो गया, कोल्ड टेम्परेचर हो गया और फीवर हो गया, इट विल इवोक द HSV1 एक्टिविटी. The lesions are not limited to lips, palate and gingiva as they are in recurrent herpes in immunocompetent individual. तो जो अगर immunocompromised individual है तो वो डाउन जाएंगे, गैंग्लियन में जाएंगे, अफेक्ट करेंगे, और immunocompetent है तो वो gingiva, lips और palate में जनरली दिखेंगे recurrent herpes infection. Okay. Now coming to herpetic whitlow, it is an occupational hazard among the dentists. Before the use of examination gloves, it represents a primary HSV1 infection, although can be secondary
recurrent infection. It can be primary or secondary. Okay, I will be dealing this in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.